Hello everyone. Previous time I shared to you all one video related to the quadratic equation. I told you that a simple explanation related to the quadratic equation. This is the quadratic equation I'm writing here: ax square plus bx plus c equal to 0. This is a quadratic equation. This is a quadratic equation. I can say ax square plus bx plus c equal to 0. This is a quadratic equation. One thing, we are going according to your syllabus. Simply I will discuss today next exercise, that is 4.2. Previous time I discussed with you all 4.1. On that exercise I discussed with you all that we searched there which equation was there quadratic or not quadratic. Okay, those equations which are in the form of power of 2, so we can say this is a quadratic equation. But in this exercise I will discuss with you factorization. What? Factorization. How will you factorize? How will you make factors of the quadratic equation for getting the solution of the equation. एक छोटी सी चीज, एक बात सुनिए. ये मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. पहले आप लोगों को यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर वर्ड. ओके, तो वन थिंग लिसन, आई एम राइटिंग हियर ax square plus bx plus c equal to 0. This a, b and c are the constants. X square or this x, anything else related to the x will be the variable. Okay, one thing listen, we will get those things which are in the form of variable. We will get the value of all these things. मैंने बोला कि यहाँ पे जो x है वो मेरा क्या है, वो वेरिएबल है. ठीक है, तो मेरे सारे आंसर उस x के इक्वलेंट आएंगे. मतलब x के इक्वल हमें किसी भी इक्वेशन में कुछ भी मिल सकता है. 1 मिल सकता है, x इक्वल टू 2 मिल सकता है, x इक्वल टू 3 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है हमें. तो जो आंसर हमें मिलेगा, जो वैल्यू हमें मिलेगा, वो हमारा फैक्टर होगा. वो हमारा क्या होगा, फैक्टर. वैसे तो हमें इस एक्सरसाइज में आप लोगों से डिस्कस करना है कि हम कैसे इन x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. लेकिन पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर. Listen, if I'm writing, देखो, after solving this equation, simply I'm getting x equal to 1, 2, 3, anything else, a, b, c, anything I will get. So I will say these values are the factor of this given equation. अब I'm saying what is the meaning of factor. Factor एक ऐसा point होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है. देखो, अगर मैं मान लेते हैं, अगर मैंने ले लिया x equal to 1, x equal to क्या ले लिया, 1. अब हमारे पास क्या, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एनीथिंग एल्स. तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने बोल दिया कि जो हमारा x है वो x हमारा इस इक्वेशन का फैक्टर है. वो x हमारा क्या है, दिस मींस x इज इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. x इज इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. तो व्हाट विल आई डू हियर, अगर मैं इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस x की वैल्यू को, जहां जहां मेरा x है वहां पे अगर मैं इस x की वैल्यू को पुट कर दूं, तो अगर मेरा आंसर आ जाता है 0, इफ आई विल गेट आंसर इज देयर 0, तो आई विल से दिस x will be the factor of this equation. If it will not be equal to 0, then I will say here this is not a factor of this equation. Understood? So simply I am taking here one example, that is I have one equation, x square 2x square 2x plus 3. Okay or not? Okay, I have this equation 2x square plus 2x plus 3. One thing, I have this equation ax square plus bx plus c. If I will compare this equation to this equation, so a is equal to 2 I will get, b is equal to 2 again I will get, and c is equal to 3 I will get. Okay, I'm writing here, I'm taking any value I'm taking. X equal to 1 I'm taking, x equal to 1 I'm taking here. So simply I'm keeping this value in this given equation, putting this value in this given equation. What will I get? Listen here, 2 1 square 2 into 1 plus 3. First we'll solve here bracket term. 2 1 square is equal to 1, 2 into 1 2, 3. तो 2 into 1 2 plus 3,
तो वी विल गेट हियर 7। तो क्या हमें ये 0 मिला इधर? क्या हमें ये 0 मिला इधर? तो अगर हमें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया और इसका आंसर हमें 0 नहीं मिला, तो x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है ही नहीं। वी विल से हियर दैट दिस x is equal to 1 is not a factor of the given equation. It's not a factor of this given equation. It's not a factor of this given equation. I am taking one more example also here. Listen, simply x square plus x minus 2. Okay, so now he is giving here x equal to 1. क्लियर? तो मुझे देखना है कि ये x इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं इस x को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो क्या करूंगा देखो, 1 स्क्वायर प्लस हाउ मच 1 माइनस 2, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो मैंने जब इस इक्वेशन में इस x इज इक्वल टू 1 को पुट किए तो मेरा आंसर कितना आ गया 0। तो आई कैन से हियर दिस x is the factor of this equation. This x is equal to 1 is the factor of this equation. This x is equal to 1 is the factor of this given equation. Okay, understood or not? So I can say here x is equal to 1. When will I put any value of the x in the given equation? If I will get a 0 answer, so I will say that point will be the factor of the given equation. Understood? Okay. So in this exercise, I can say in the 4.2 exercise, तो वो थोड़ा सा उल्टा काम करेंगे। वो क्या करेगा भाई, वो आपको क्या दे देगा, इक्वेशन देगा। ही विल गिव यू इक्वेशन। तो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वी हैव मैनी मेथड्स, we have many complete square method, clear discriminant method, we have many method, but he is asking this exercise only means solve the equation by factorization method only, by factorization method only. तो 4.2 exercise depends only on factorization, so you also have to keep complete attention here. First of all, I'm going to discuss here some basic terms related to this 4.2 exercise. Okay, so I'm writing here equation 1, that is ax square bx plus c equal to 0 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे जो भी फैक्टर निकलेंगे उनको इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, सेकंड इक्वेशन इज देयर, second equation is there, what ax square, this is now minus bx plus c equal to 0. This is the third equation, that is what ax square minus bx minus c equal to 0. और fourth equation is what ax square and plus bx minus c equal to 0. अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज you can, I'm just going to clear to you all friends that in this equation ax square plus bx plus, देखो यहाँ पे I can see plus b and plus c both are positive term. Here b is negative term and c is the positive term. Here both are negative term, or here first is their plus term and second is their minus term. Then how will you factorize the given equation? By simply all this for equation. Okay, now I'm going to solve first equation. Listen, ax square plus bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें आपको फैक्टर कैसे करने हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग वन बेसिक रूल टू यू ऑल। हाउ विल यू मेक फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन? लिसन, कई इक्वेशन आपकी अलग अलग तरीके से देता है। वो क्या देता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, लेकिन कई केसेस में वो ए नहीं देता, बी नहीं देता, कुछ नहीं देता। वो आप लोगों को क्या बोल देता है, इधर 2 दे देगा, 5 देगा, कई बार 1 दे देता है। क्या देता है, 1। तो यू कैन इग्नोर 1, because when you will multiply anything to give a number that can be 1, then you will get the same result, you will get the same answer. Okay, but one thing, listen here, if for solving the equation, for getting the factorization method, what will you do? X square coefficient you will see, and the final term which are without x, you will see that term also. What will you do? You will multiply both term, and at one corner you will write, it is the rough work only, then you will multiply a into c. So I can say here this c is positive term, this a also positive, then after multiplication I will get this plus 1 only. What will I get there? Plus 1 only. Okay, then second thing, then we will focus on this second term, that is the b, that is what b. Then this b I'm going to write here, then
आई विल मेक या आई विल ब्रेक दिस बी इन टू पार्ट्स। इस बी को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। वो दो पार्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं। उन दो पार्ट को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनको मैं अगर ऐड करूं तो मेरा बी आना चाहिए। अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ए मल्टीप्लाई सी वाला आंसर मिलना चाहिए। ए मल्टीप्लाई, जैसे कि मैं ले लेता हूं, अगर बाय चांस वो मैं आई विल डिस्कस इक्वेशन विद यू ऑल। और वन थिंग लिसन, फैक्टर्स व्हाट विल हैपन, फैक्टर्स हाउ विल यू गेट, लिसन हियर, बी को जब आप ब्रेक करेंगे, व्हेन यू विल ब्रेक बी, then both factors या both breaking points you will get ना, तो both terms, both numbers will be what, positive, both numbers will be positive, क्योंकि when you will multiply plus to plus you will get प्लस। ओके, इन फैक्टर्स को दोनों को जब दोनों है प्लस के, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस में आंसर मिलेगा। जैसे कि अगर मेरे पास है +2 मल्टीप्लाई +2, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा, और 2 × 2 क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे, यू विल गेट 4, 4 × 2 मल्टीप्लाई 4। ओके, और व्हेन यू विल ऐड बोथ नंबर व्हेन यू विल ऐड +2 यू विल गेट व्हाट, +4, तो दिस नंबर विल बी प्लस, तो बोथ नंबर्स विल बी पॉजिटिव। ओके, देन answer means result of both factors you will get what, x, both value will be negative only, this is the simple verification of the result and for getting the accurate answer of the question. So simply what will you do, you will see here, if b, when you will make this equation factor, so what will happen, so in this equation both numbers will be plus and result will get their negative and minus only. Okay or not? Okay, first equation I will discuss here today. One thing, listen, I'm giving you one example, listen carefully. I'm taking here what, x square plus, listen here, x square plus 8x plus 12 equal to 0. Firstly you have to see the equation, अब पहले देखो यहां पे मेरा x का स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट कितना है मेरा यहाँ पे 1, कोफिशिएंट कितना है 1। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, व्हाट विल आई गेट, क्या है, लिसन हियर, a x square b x plus c equal to 0. Compare this equation, x square front side is 1, what is ahead present to x square 1, here is a, तो I can get a is equal to 1, b, x के फ्रंट में b है, इधर x के फ्रंट में 8 है, then b value is 8 and c is equal to what, 12. अब come on the condition here, what will you do, firstly what will you do, multiply a and c, then multiply a and c, a into c, what is a 1, what is c 12, so 12 into 1 how much you will get, 12, so this will be the positive number, no sign is here, so I can write here this is the positive number. Okay, then come on the point b is what, 8, b is what 8, so I will make a factor of this b, both factors will be पॉजिटिव ओनली, इसमें कोई भी फैक्टर माइनस का नहीं बनेगा, और बोथ फैक्टर्स विल कम्स फ्रॉम दिस नंबर ओनली, वी कैन ब्रेक दिस नंबर एंड बोथ फैक्टर्स विल कम फ्रॉम द थिंग्स यू विल नॉट गेट आउटसाइड, क्लियर। तो वन थिंग लिसन हियर, अब ब्रेक दिस पॉइंट, हाउ विल यू गेट फैक्टर्स ऑफ इट, b इज इक्वल टू 8, इस 8 को ऐसे आपको ब्रेक करना है कि उसको ब्रेक करते टाइम अगर उन दोनों को जोड़ें, इफ यू विल ऐड बोथ नंबर यू शुड गेट देयर 8 ओनली, बट व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ नंबर इट शुड कम 12 ओनली, देन हाउ विल यू सॉल्व, सी हियर, हाउ विल यू सॉल्व, लिसन केयरफुली, हाँ, बट एक मैं छोटा सा मेथड आपको फैक्टराइजेशन का बता दे रहा हूं, जैसे कि आपको 8 है, एक नॉर्मल तरीके से करके देख लेना, दो फर्स्टली यू विल डू दिस बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टेबल, क्लियर, तो आई कैन डू इट एज सेम लाइक इट, ओके और नॉट ओके, 2 4 8,
one thing, listen. By mistake I wrote here 8. 8 will not come here. Listen here carefully. You will you will make here factor of this 8 na. So for getting factor you have to select this 12. Simple trick I'm telling to you. So I'm writing here 12, then make it simple factor. 2 6 is 12. Okay, understood or not? अब in you got here what 2 into 3. अब देखो, अब इसके अंदर क्या है 2 into 2 4 4 3 are 12. तो when you I will multiply all 3 I will get 12 number. ओके और नॉट ओके? अब मुझे इन 3 नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है, कोई 2 नंबर मुझे ऐसे सिलेक्ट करने हैं इसमें से कि मेरा उनका सम तो 8 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए मेरा 12. तो कैसे करते हैं देखो, अगर मैं इन 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं, कितने 2 को सिलेक्ट करता हूं इन 2 को, तो 2 को सिलेक्ट करो तो कितना आएगा मेरा 2 + 2 4. ओके एंड आई एम टेकिंग सिंपली दिस 3. तो 4 + 3 = 7 and 4 into 3 is equal to 12. So 7, it's not a mandatory, no need of it. Clear? One thing, come on the second trick. Next point, 2 into 3. If I'm selecting both this number, I'm selecting both these 2 numbers right here. 2 into what? 2 into 3 what? 6. What? 6 na? When I will add both number, 2 + 6 is equal to how much? 8 and multiplication is equal to 12. So I can say both numbers is here 2 and 6. Both numbers is here 2 and 6. When I will do next example, in that example you can understand easily. Clear? And listen here, I got here 2 factors. One is 2, second is 6. Okay, then I will break here this 8 in 2 numbers. One is 6, second is 2, and first number you will write faster. First number you will write first. Then how will you write? Listen here, and things will remain same. Things, all process we have done here only for getting the factors only. Listen here, 1x², then I will get 2 factors of this 8, then 6 and 2. So I can write 6 and 2, but x will come in back side as same like it. Okay or not? Okay, plus 12 equal to 0. Then see here, addition of 6 plus 2 equal to 8. 6 into 2, 6 2s are 12. I will get here 12. Understood or not? What will I do next term? I will underline this term and I will underline this term. What will I do? See here, तो इसमें जो कॉमन आता है सिर्फ 2 नंबर्स में, पहले 2 में x² और 6x में जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, बाकी सब ऐसे छोड़ दो. तो I can see here x will come common here, then I can write x plus 6 only. Come on the second, I will from this I can take common how much there 2. Then which number will get here? X plus 6 equal to 0. Then I will get from now I will see whole equation. So from whole equation I can get x plus 6, x plus 6 common. Then x plus 6, अगर मैं यहाँ से x plus 6 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा? इधर x बचेगा. अगर यहाँ से मैं x plus 6 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ मेरा x plus 2 बचेगा इक्वल टू 0. तो फर्स्ट व्हाट विल आई डू? तो फर्स्ट x plus 6 equal to 0 and x plus 2 equal to 0. Then I can write x equal to -6 and x equal to -2. Then I can say -6 and -2, both factors of this given equation. So I told you that answer will come in the negative, means both factors will be negative. So I can say here x equal to -6 and -2. So this is the answer factors of this equation. If you will put a -6 in this equation, -2 in this equation, you will get a 0 answer. Okay, one thing you can see here, how many numbers you get in the answers here? Only 2 number. तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे अगर हमारा x का पावर 2 है तो उस इक्वेशन के हमें कितने फैक्टर मिलेंगे? सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे. अगर मेरा x का पावर यहाँ पे 3 होता तो हमारे यहाँ पे कितने आंसर मिलते हैं हमें? वी विल गेट हियर 3 आंसर्स. हाउ मच आंसर विल गेट हियर? 3 ओनली. हाउ मच? 3 आंसर विल गेट हियर. ओके, फास्टली आई एम डिस्कसिंग वन मोर एग्जांपल टू यू ऑल. लिसन हियर, one second. High equation I am writing x² plus 9x plus 14 equal to 0. What will you do? First, here is how much? 1. Then compare this equation with ax² plus bx plus c equal to 0. Then what is the value of a? 1. What is the value of b? 9. What is the value of c? 14. Condition, a into c. What is the value of a? 1 into what is the value of c? 14. Then we will get here 14.
एंड व्हाट इज द वैल्यू b इज इक्वल टू 9. तो सिंपली इस 9 के हमें फैक्टर करने हैं. वी हैव टू मीन्स अप्लाई द फैक्टराइजेशन ऑन दिस 9 ओनली. Clear? Understood or not? What will you do? Again, you will select this 14. You will select this 14. How will you select 14? Then factorize this number. How will you factor? 2 7 ja 14. Okay, or 7 1. Okay, the one number we get there, how much? 2. Second is 7. Here is not any other arrangement, so I can write here 7 plus 2. 7 plus 2 how much? 9, or 7 into 2 is equal to 14. We can convert easily. The fact this means our method is very easy for getting the factorization, or this can be new for you all. Okay or not? Okay, so b is equal to 9, so I can write here 7 plus 2. Then same I'm writing this equation here, x square plus 9x plus 14 equal to 0. Okay, factorize this number. This is 9x means bigger one you will write first, then 2x plus 14 equal to 0. Then I can take common x, divide this number in two parts, take common from first, x will come, then x plus 7. Okay, then from this equation 2 will come, x plus 7 equal to. एक चीज और याद रखिए इसमें, जो आपका अगर दिस इज x plus 7 और दिस इज ऑल्सो x plus 7, अगर बोथ इक्वेशन यू विल गेट सेम, तो इट मीन्स दैट यू कैन से योर क्वेश्चन इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, एक्यूरेट, यू विल गेट राइट आंसर. ओके, देन x plus 7 x you can take common from whole equation. I am taking that, which number I will get? X plus 7 I will get. Then x plus 7 comes out, then we'll get there x plus 7 comes out, we'll get here 2 equal to 0. Then I can take x plus 7 equal to 0 and x plus 2 equal to 0. Then x, this 7 goes another side, minus 7, or this 2 goes another side, minus 2. Then I will get two values, one is 7, second is 2. These are the answer of this equation. Okay or not? Okay, now for homework I'm giving you all some question. X square 15x plus one question. Second question is here, x square plus 4x plus 3 equal. These both questions you will solve. Simple, I'm telling here 3 1 for second question and 12 3 for first question. Okay, you will solve this question. Okay, bye bye.